April 1, 2025. I woke up very early and had breakfast at 7:30 a.m. Real testing time starts today. Testing our grit, determination, commitment, stamina, endurance, and skill. I am talking about the hike to a monastery, a temple complex hanging on one side of a cliff at an elevation of 10,000 feet above the sea level. It is one of the most prominent Buddhist sacred sites in Bhutan, located 900 meters above the Paro Valley. One has to hike the steep trail with over 750 steps covering a distance of 4 kilometers one way to reach the temple. Agile youngsters with hiking experience may complete the round hike in 6 hours. Seniors may require almost 8 to 9 hours. Per head charges to visit the monastery is BTN or INR 500. One has to start as early as possible and complete the hike before sunset. The monastery is open from 8 to 4. Tiger's Nest Monastery is usually visited as the last and final spot in Bhutan tour itinerary because one can be fit and fine to do it after all the climbing done at various forts and monuments by then. Besides, the tour operators are more concerned about the well-being of the travelers. Any mishap during the trek may completely spoil the tour. So, our guide Sonam told us that it was scheduled almost at the end of our tour. I had plans to do the full hike and ask Meena to join me up to the cafeteria and stay back until I returned from the monastery. Meena stayed back at the hotel since she was too tired after the long tour and was not confident enough to hike the steep trail. So, I decided to do it up to the cafeteria and if possible visit the viewpoint 1.2 kilometers further up the cafeteria. Sonam told me that I may need to buy the entry ticket if I wanted to go beyond the cafeteria. There is checking on the way and they usually allow those who visit cafeteria. Beyond that, you have to buy the ticket, sir. Decide before we start because ticket issuing office is at the starting point of the hike. I dropped the idea of visiting the viewpoint and told Sonam that we shall go up to the cafeteria and return by afternoon so that Meena can also spend some time going out for shopping and eating out rather than wasting her time at the hotel. Sonam arrived a bit late because he was staying in his home in Paro at a distance of 1.5 kilometers from our hotel and he had to help his family in carrying paddy saplings to the fields. When he realized that he was getting late, he called Sange and asked him to pick him up from a certain point to save time. So, we started from our hotel at 9 am and after crossing some beautiful houses and landmarks, we reached the Tiger's Nest Trail car park 14 kilometers away at around 9:30 am.
My one mistake spoiled the video coverage to a great extent. I was ready with my action camera mounted as body camera, but there were two goof-ups. The camera angle was set when we were at the car park, and the camera was focusing mostly on the ground as I hiked up. It is not possible to check the monitor when we use body camera. Second mistake was not carrying extra memory card, in spite of carrying extra batteries. The card inside the camera was almost full because of the continuous coverage done during our trip. After 30 minutes of hiking, it stopped recording, but I noticed it only after an hour. So, most of the trail was not covered. Later, I switched over to my mobile phone camera and tried to cover as much as possible. Sonam led me up the trail. I had carried hiking poles with me in case of need, but didn't use them for hiking up. On our way down, at a certain point for taking selfie, I posed with the poles but continued using them for a short distance as they came in handy while descending the steps. Initially, the climb is not steep. The path goes through pine forest and we get a good cover from direct sunlight. तो इधर से भी थोड़ा दिखेगा अगर आप ये नेट में सर्च करेंगे तो उसका किलोमीटर 5 दिखाएंगे क्योंकि वो जब हम सी लेवल से एलिवेशन मेजर करते हैं ना सर डायरेक्टली हाँ ऐसे ही किया था इन लोगों ने तो जब पैदल जाते हो तो 15 चलना पड़ेगा बहुत तेज फिर से घूम के जाना पड़ता है हाँ जो लोग घर लेते हैं वो इधर से शुरू होता है A senior couple from Nagpur, Maharashtra attracted my attention. The 72-year-old man was wearing pajama, shirt and shoes, while his 64-year-old wife was wearing traditional Maharashtrian sari and Hawaii slippers. I talked to them and came to know that they are farmers, but hiking or trekking is not their forte. Their only hiking experience was at Raigad, Maharashtra some years ago. They seemed more enthusiastic than me while going up, and they took rest at very few places. बोला ना मैडम ने उधर चप्पल में गया लेकिन स्टे पे बोला ना लगता है खेती बाड़ी करते होंगे हाँ लेकिन इधर तो स्टे नहीं है ना हाँ इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये तो बीच में थोड़ा है हाँ लेकिन ज़्यादा एक प्लेन है ना इसलिए नीचे आते समय स्लिप होने का चांसेस है इसलिए वो पेड़ को बैलेंस में ऐसे स्टेबल बना के आना पड़ेगा ना उस टाइम में थोड़ा
इधर से चलना है या उधर से घूम के सर? ये शॉर्टकट है ना? जी घूम के जाएंगे आराम से. तो सब स्किप होता है ना? हाँ. As we climb up, the trail starts getting steeper, and we also come across many steps that are built by placing wooden beams across the path. Sunlight also falls directly on the head, so we need to watch our move as we climb every step. जब हाइक कर रहे हो तो ऐसा नीचे नहीं देखना चाहिए ना. अच्छा. तो बहुत थक के आया है ना हम, बॉडी वार्म अप. हाँ हाँ. तो ऐसे बैठेगा तो लेग बीच में खुद ना खुद गिव अप हो जाएगा. अच्छा. कभी भी रेस्ट करते हो तो हम ऐसे ही बैठ के हाँ. करना चाहिए. और नीचे बैठेगा तो लेग गिव अप कर देगा. हाँ. अभी हम जाके नहीं आते हैं सर. बहुत अभी तो 10% भी नहीं हुआ है. कम से कम वो कैफे पहुंचने के लिए नॉर्मली उधर 1 आवर 30 मिनट इतना टेक करते हैं. ओह, नॉर्मल वॉकिंग से. जी सर. हाँ. टोटल कितना 3.5 किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से वो कैफे तक सर? हाँ, कैफे नहीं, टेम्पल तक. टेम्पल तक? हाँ. टेम्पल तक तो वो 7-8 किलोमीटर से ऊपर है सर. ये पूरा घूम के जाना पड़ता है. वन वे. हाँ सर, 1 वे. ओह हो. तो अभी टेम्पल नजदीक दिख रहा है. हाँ उधर से पूरा घूम के जाना पड़ता है. हाँ हाँ. और नेट में तो 5 किलोमीटर दिखाएगा. अच्छा. और डायरेक्टली मेजर किया हुआ है ना. हाँ. काय नाही विचारतो. हल्ली फोटो. आपण तिथे पोहोचतो नंतर जोरात दिसतो ना.
डेमो तो कहाँ है नहीं तो विशेष है आता पैसे दिना या का काय लागतं आता काय मी पहिले तुम्हाला सांगितलं जाऊ द्या काही तिकीने दान दिलं म्हणून समजा हाँ सर हम चाहिए आज पूरा दिन इसके लिए है ना हाँ हाँ उस तरफ चाहिए सर हाँ हाँ स्टेप से तो ऐसे ऐसे चल के पटना है इतना ही है ना हाँ इसलिए वो पेड़ में दर्द होना शुरू कर देते हैं Dodi bomina. हाँ सर सांस आराम से लीजिए लंबा से और ज़्यादा सांस तेज लेने बैग हमको दीजिए सर हाँ नहीं 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 I can manage, no problem. पानी रख सकते हो? पानी पी लेना दो घोट पानी पी मैंने शॉर्टकट बताया था ना हाँ वो इधर से जाता है ओह लेकिन बहुत स्टीप है हाँ जल्दी तो पहुंचेगा लेकिन बहुत स्टीप है पानी पीना है कैरी करके वो जाता है उधर Travel from Bhutan. Is it hard to get visas and passports? And Yes, it's difficult to get passport ये दिखाने के लिए उसको बुजुर्ग लोग कैसे जाते हैं करके मैडम को दिखाने के लिए हाँ हाँ आधा हो गया हाँ आधा हो गया आधा होने वाला है हम पहली बार आए हम भी पहली बार है
आपके गांव में जाते हैं आप पहाड़ी में? हाँ पहाड़ी जाते हैं गाँव से। हाँ पूना में पहाड़ी है। हाँ पूना में, कंडाला में, स्टेप होगा ना सर? महाबलेश्वर कंडाला। हाँ महाबलेश्वर आ गया वो घूम। हाँ वो भी गया था। नासिक में है? नासिक में नहीं गया। नहीं, शिरडी में, रायगढ़ में गया था। हाँ रायगढ़ में। हाँ रायगढ़ तो बहुत ऊंचा है ना। वहाँ गया था। हाँ हमारी घरवाली है सामने वाली। हाँ उनसे बात किया मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ The steps are not even. At places, the wooden stumps are dismantled, and most of all, one wrong step may cause a fall, and one may end up with a fractured jaw or limbs. There were instances of travelers even losing life by slipping and falling down the trail into the gorge. तो 2018 में 103 years हो गया। ओ रोडोडेंड्रन। हाँ रोडोडेंड्रन। हाँ और एक का उधर नीचे भी क्या ब्राउन ओक है, हाँ उसका भी 2018 में 103 years। हाँ और नीचे आते समय भी इधर से ही आएंगे सर। हाँ ये क्या तो स्टेप से आसान है ना? नहीं सर, नहीं। बहुत थक जाते हैं। अच्छा फिर वो थोड़ा बड़ा है, हाँ इसलिए ऐसे पैर को ऐसे उठा के हारना पड़ेगा। हाँ हाँ तो ज़्यादा पैर को ऐसे हिलाने से स्टेप में तो बहुत थक जाते हैं। हम ये फ्रॉक जंप करने की जैसा है ना सर। हाँ हाँ रेस्टिंग पॉइंट आ गया। आ गया। हाँ लेकिन अब बैठना नहीं। और सीट में थोड़ा ऐसे खड़े होके देख हाँ। सकते। जब आप बिजी हो तो ऐसे। हाँ Hello. 지리진 이모라. 네, 매만이야. 굳이 룸 나가는 gem수가 뭐. 아니, सर आपका रूम नंबर क्या है सर? 102। 102 नंबर। 네, 50 नंबर थी मैडम। तो मैडम यहाँ ही हाल में कॉल करना मैडम। और उसको ये लंच के बार वो बोल रहा है कि हाँ वो रूम फोन में लेके जाता है, बोल रहा है कि उधर का फिश का नंबर नहीं है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, सिर्फ पूछने के लिए मैडम का हाल। हाँ सर बस आप वो देख के बता सकते हैं ना आप? वो नहीं, वो फोन रूम में लेके जाएंगे और आप मैडम के साथ भी बात कीजिए। उनके साथ बात करने से थोड़ा ये होगा ना सर। और दूसरा बोलेगा तो नहीं लगेगा। हम उसको ज्यादा ये नहीं करते, हम उसे हो सके तो इंडिपेंडेंट। Climbing and resting, it took us about 90 minutes to reach the cafeteria, which is not bad for a senior of my age, as per Sonam say. जस्ट कुछ चाहिए तो आप अंदर ऑर्डर कर सकते हैं सर। ओके ओके अगर स्मोकिंग करना है तो उस तरफ आना पड़ेगा। ओके ओके हम उधर बैठेंगे। ओके ओके
Okay, sure. Taksang was first built in 1692 by Gyaltse Tenzin Rabgye. This monastery is dedicated to Guru Padmasambhava or Rinpoche, who is believed to introduce Buddhism in Bhutan. Taksang Lakhang or Tiger's Nest Monastery is the most highlighted monument in Bhutan tourism. It has both mythological and historical importance. According to legend, Guru Rinpoche flew to this location from Tibet on back of a tigress who is believed to be a former wife of an emperor known as Yeshe Sogyal. Guru Rinpoche meditated in a cave for 3 years, 3 months, 3 days, and 3 hours to tame a demon. Thus the name Taksang or Tiger's Nest. Ever since Guru Padmasambhava meditated here in the 8th century, many others came to meditate at this holy place. We spent about an hour and a half at the cafeteria capturing Tiger's Nest perched over the cliff and the lovely surrounding scenery and taking selfie. और आपके फोन में बाद में निकले. ठीक है, वो वीडियो बनाना है ना. यहाँ खड़ा हो जाओ. हाँ सर. Okay, sister, thank you so much. आशु से कंटिन्यू रखी Thank you बस. so much. आशु से विवाद नहीं है, आशु से घूमत नहीं. By that time, you will get some moves, not success. Moves. I'm not sure. Cosmo, you still? You did it. You Kimia. हेलो, आपके पास आइस्ड टी है? आइस्ड टी अच्छा एक दे देना. कितना है सिस्टर? 180. लावना से तब नहीं ना. ओके. तुम्ही काय नाही रेड बुल काय हा ते आम्ही दोघे तेच घेऊ रेड बुल काय 3 झाल्या ऐका हो 3 झाले 240 आमचे 240 मी 200 द्या ना
वाकोरी तो वरती गेले ना ते आता गाईड जो आहे ना गाईडला मी सांगितलंय वाकोरी तुझ्या पाठी आहे एक साधारण 10 मिनिटं आणि बाकी तुझ्या बरोबर आहे 7-8 नाही ते असं थांबत नाही चालतच राहायचं ते सगळेजण चालतच राहणार ते बरोबर स्पीड एकमेकाला कॅच करणार डोंट वरी आता ते बरोबर ज्याला नाही जमणार I also tried my luck with a short time-lapse video. Since it was not that cloudy, I could not do full justice to the time-lapse capture. The stills and the videos showing the front look of the monastery and the cliff from the viewpoint are sourced from internet. Mules go up to a certain point where there are prayer wheels and benches to sit and take rest.
उधर 1 मिनट रुकेंगे। धूप बहुत चढ़ा है अभी, गर्मी चढ़ी है अभी। As we walked down, I came across a resting point from where we get a lovely view of the cliff and the mountains.
Separate tracks are designed for mules and humans, but at some points they are common and then we need to be careful. Mules don't care about our safety. और ये उधर मंदिर तक जो वो सैनिक के लिए देने तक जाने तो कैसा रहा हाइक सर? Hi. Hello. हेलो, कैसा रहा हाइक? अच्छा रहा सोनम, हाँ बहुत अच्छा रहा. आपने बहुत मदद किया हमें ऊपर लेके जाने में, नीचे लेके आने में, और ये भी हमारा मदद कर रहा है अभी. हाँ सर. ऊपर जाने में हमने ये इस्तेमाल नहीं किया, नीचे आने में भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी स्टीप होता है ना, हाँ सर. तभी लेके आना पड़ता है. हाँ. ओके, थैंक यू. Almost at the end of the round, there are 3 small temples with a stream where some people relax and drink water. I also met a couple of European ladies who were friendly. We exchanged pleasantries. Hello. Cheese. Smile. Smile because you have achieved it. You have done it. That's great. Have a nice time. Bye.
My return hike from the cafeteria to the car park was completed in 75 minutes. Sonam had already called Sange and asked him to pick Meena from our hotel so that she can see the trail. हाँ जाना है. हमारा आदमी अभी बोल रहा है 10-20 मिनट लगे. अब गए, अब दूसरे टैक्सी पकड़ के गए. हम वो दफ्तर में अभी आ रहे हैं, हम टाइम लगेगा तो. I used the washroom at the car park and then we returned to Paro city for lunch at the mountain cafe and little shopping at the main market area for collector's items. Mountain Cafe is a cozy restaurant with a variety of snacks, pastries, hot and cold beverages. Meena was attracted to blueberry frosted cake, so we went for blueberry cake and a plate of French fries. I sipped an iced peach tea while Meena went for a sweet lassi. Each item was well prepared and affordable. Then we went shopping at a nearby store and Meena bought some collector's items. From there we walked the short distance to the CSI market and bought local multiflora honey and some cooking ingredients. After shopping, we met Sonam and Sange at the car park. I went along with Sonam to take selfie of Paro Fort and riverfront.
fish. Yes, sir. Trout fish. Then we returned to our hotel. On the way, Sonam briefed us about the next day's journey to Chelela Pass and Ha Valley. एक 5-10 मिनट रुकेंगे बस. हाँ. हाँ. ओके. ओके. उसके बाद हमें जाके उधर वही साइड ओके. टेम्पल और ओके. कितना घंटे का रास्ता है यहाँ? यहाँ से वो 3 जगह हाँ टोटल. तो 12-12:30 को हम पहुँचेंगे वहाँ. इधर से कुछ लेना है सर? नहीं कुछ भी नहीं अभी. हाँ तो हाँ जाके पहले साइट सीइंग करेंगे ना. हाँ. बाद में होटल जाएंगे. हाँ. ठीक. कल जाके सर सुबह से हाँ हाँ ओके ओके हाँ जैकेट भी साथ ओके 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 ओके. जैकेट कैप सभी वुलन कैप. हाँ. I had bath and freshened up, took rest for a while, and then we had sumptuous complimentary dinner at the restaurant.